हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे HPCL 2026 की जो रिक्रूटमेंट है फाइनेंस ऑफिसर, उसके लिए प्रोफेशनल नॉलेज का आज हम यहाँ पे टॉपिक 19 फाइनेंशियल रिस्क एंड रिटर्न कंसेप्ट के कुछ एमसीक्यूज कवर करेंगे। ठीक है, और ये जो सीरीज हमने स्टार्ट की है ये कंटिन्यू टिल एग्जाम तक जो स्टार्ट रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। वैसे देखिए, फाइनेंस ऑफिसर के लिए पीडीएफ भी अवेलेबल है जिसमें सभी टॉपिक्स एमसीक्यूज कवर किए हैं। इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, पीडीएफ से जितना हो सके तुम उतना प्रिपेयर कर सकते हो। तो सजेस्ट है कि पीडीएफ आप परचेस कर सकते हो जिसमें सभी 11 सब्जेक्ट्स 12,500 प्लस एमसीक्यूज कवर किए हैं और इम्पोर्टेंट के लिए बहुत एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सअप नंबर दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क एंड रिटर्न कंसेप्ट के कुछ एमसीक्यूज। तो देखिए, फर्स्ट है रिस्क इन फाइनेंस इज बेस्ट डिफाइन एज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सर्टन लॉस, सेकंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, थर्ड गारंटीड रिटर्न एंड फोर्थ हाई प्रॉफिट। तो करेक्ट आंसर है सेकंड वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न, बिकॉज रिस्क डज नॉट नेसेसरी मीन्स लॉस, इट मीन्स अनसर्टेनिटी और फ्लक्चुएशन इन रिटर्न। नेक्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट एवरेज रिटर्न, सेकंड टोटल रिस्क, थर्ड सिस्टमैटिक रिस्क एंड फोर्थ प्रॉफिटेबिलिटी। तो करेक्ट आंसर है सेकंड टोटल रिस्क। स्टैंडर्ड डेविएशन शो हाउ मच रिटर्न डेविएट फ्रॉम द एवरेज एंड इट इंक्लूड बोथ सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, हेंस इट इज मेजर्ड टोटल रिस्क। नेक्स्ट थर्ड बीटा मेजर्स। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट टोटल रिस्क, अनसिस्टमैटिक रिस्क, सिस्टमैटिक रिस्क एंड बिजनेस रिस्क। तो करेक्ट आंसर है थर्ड systematic risk, because beta measure how a security move compared to the market, since it reflect market related fluctuation, or it captures systematic, that is non diversifiable risk. Okay, next fourth, if beta equals to 1.5 it indicate। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लेस volatile than market, second same as market, थर्ड मोर volatile than market एंड रिस्क फ्री। तो करेक्ट आंसर आएगा थर्ड मोर volatile than market, because beta equals to 1.5 means if market move by 1% and the stock move by 1.5%, hence it is more sensitive and riskier than the market। नेक्स्ट फिफ्थ रिस्क फ्री रेट इज टिपिकली रिप्रेजेंटेड बाय। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट इक्विटी शेयर, सेकंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी, थर्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड एंड फोर्थ म्यूचुअल फंड। तो करेक्ट आंसर है सेकंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, बिकॉज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर कंसिडर्ड रिस्क फ्री because default risk is negligible, especially for sovereign governments। नेक्स्ट सिक्स एक्सपेक्टेड रिटर्न इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मिनिमम रिटर्न, मैक्सिमम रिटर्न, वेटेज एवरेज रिटर्न एंड रैंडम रिटर्न। तो करेक्ट आंसर है थर्ड वेटेज एवरेज रिटर्न, बिकॉज एक्सपेक्टेड रिटर्न इज कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग ईच पॉसिबल रिटर्न with its probability and summing them, so its probability weightage average। नेक्स्ट सेवंथ डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूस। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट सिस्टमेटिक रिस्क, अनसिस्टमेटिक रिस्क, मार्केट रिस्क एंड इंटरेस्ट रिस्क। तो करेक्ट आंसर है सेकंड अनसिस्टमेटिक रिस्क, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन स्प्रेड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस असेट, reducing company specific, that is unsystematic risk, but market risk remain। नेक्स्ट एट CAPM फॉर्मूला है। CAPM मतलब क्या होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस कंपनसेशन फॉर सिस्टमैटिक रिस्क इनटू बीटा इनटू मार्केट प्रीमियम। ओके, तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे थर्ड। ओके, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस कंपनसेशन सिस्टमैटिक रिस्क प्लस बीटा इनटू मार्केट रिस्क प्रीमियम। नेक्स्ट नाइन्थ इफ बीटा इक्वल्स टू जीरो एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मार्केट रिटर्न, रिस्क फ्री रेट, डबल रिटर्न एंड जीरो। तो करेक्ट आंसर है सेकंड रिस्क फ्री रेट, बिकॉज बीटा जीरो मीन्स नो मार्केट रिस्क, सो इन्वेस्टर ओनली अर्न रिस्क फ्री रिटर्न, सो एज नो रिस्क प्रीमियम इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट टेन हायर रिस्क जनरली लीड्स टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट लोअर रिटर्न, नो चेंज, हायर रिटर्न, जीरो रिटर्न। तो करेक्ट आंसर है थर्ड हायर रिटर्न, बिकॉज इन्वेस्टर डिमांड हायर रिटर्न फॉर टेकिंग हायर रिस्क, दिस इज द बेसिक रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट वैसे देखिए इंग्लिश ग्रामर के लिए पीडीएफ अवेलेबल है जिसमें शॉर्ट नोट प्लस प्रैक्टिस एमसीक्यूज है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट 11th वेरिएंस इज। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट स्क्वायर रूट ऑफ एस डी, सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ एस डी,
थर्ड मीन डेविएशन एंड फोर्थ एवरेज रिटर्न। तो करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर रूट ऑफ एस डी मीन स्क्वायर रूट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशन बिकॉज इट अवॉइड नेगेटिव डेविएशन। नेक्स्ट 12th पोर्टफोलियो रिस्क डिपेंड ऑन। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट कोरिलेशन बिटवीन असेट, सेकंड इंडिविजुअल रिस्क ओनली, थर्ड डिविडेंड पॉलिसी एंड फोर्थ टैक्स रेट। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट कोरिलेशन बिटवीन असेट बिकॉज इवन इफ इंडिविजुअल असेट आर रिस्की combining asset with low or negative correlation reduce total portfolio risk. नेक्स्ट 13 परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1 लीड्स टू। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट मैक्सिमम रिस्क, मिनिमम रिस्क, नो चेंज, इन्फिनाइट रिस्क। तो करेक्ट आंसर है सेकंड मिनिमम रिस्क बिकॉज व्हेन टू असेट्स मूव एग्जैक्टली अपोजिट लॉस इज वन आर सेट ऑफ बाय गेन्स इन अनदर दैट इज रिस्क कैन बी minimized that is even eliminated. Next 14 systematic risk cannot be reduced by। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन, हेजिंग, पोर्टफोलियो, asset allocation। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट डाइवर्सिफिकेशन बिकॉज systematic risk affect the entire market that is inflation or recession so diversification cannot eliminate it. Next 15 unsystematic risk arise due to। देखो ऑप्शन है फर्स्ट इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, फर्म स्पेसिफिक फैक्टर एंड मार्केट क्रैश। तो करेक्ट आंसर है थर्ड फर्म स्पेसिफिक फैक्टर बिकॉज अनसिस्टमेटिक रिस्क इज रिलेटेड टू इंटरनल कंपनी फैक्टर लाइक मैनेजमेंट स्ट्राइक प्रोडक्ट फेल्योर एक्सेट्रा। नेक्स्ट 16 कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मीन स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। ओके मतलब फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर आएगा बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन मेजर रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न यूजफुल व्हेन कंपेयरिंग डिफरेंट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट 17 अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर प्रेफर्स टू। देखो ऑप्शन है हाई रिस्क लो रिटर्न, सेकंड लो रिस्क हाई रिटर्न, हाई रिस्क हाई रिटर्न एंड नो रिटर्न। तो करेक्ट आंसर है सेकंड लो रिस्क हाई रिटर्न बिकॉज a rational investor prefer minimum risk for a given number given return or maximum return for the given risk. Next 18 market portfolio has beta equals to। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट 0, 0.5, 1, 2। तो करेक्ट आंसर है थर्ड 1 बिकॉज market portfolio represent the benchmark so its beta is always 1. Next 19 security market line means SML shows relation between। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट रिस्क एंड रिटर्न, सेकंड कॉस्ट एंड प्रॉफिट, थर्ड सेल्स एंड कॉस्ट एंड फोर्थ डिविडेंड एंड प्राइस। तो करेक्ट आंसर है फर्स्ट रिस्क एंड रिटर्न बिकॉज security market line graphically represent CAPM and show expectancy return versus systematic risk that is beta. Next 20 if actual return greater than expected return in CAPM then stock is। तो देखो ऑप्शन है फर्स्ट ओवरवैल्यूड, अंडरवैल्यूड, रिस्क फ्री, वर्थलेस। तो करेक्ट आंसर है सेकंड अंडरवैल्यूड बिकॉज if a stock gives more return than required it is cheap that is undervalued so investor will buy it। वैसे देखिए फाइनेंस ऑफिसर के लिए पीडीएफ अवेलेबल है ऑल इन वन जिसमें 11 सब्जेक्ट्स कवर किए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड पीडीएफ है एंड इंग्लिश ग्रामर। जिनको भी पीडीएफ चाहिए होगी व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके पीडीएफ आप परचेस कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू सभी वीडियोस आपको मिल जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।